Very good morning, students. Today we'll be dealing with the topic of testamentary guardian and their powers provided under the Hindu Minority and Guardianship Act 1956. Now, what do we mean by the term testamentary guardian? Students, I hope you remember what do we mean by the term natural guardian, which we dealt in our earlier lecture. Now let us see what is the testamentary guardian. Section 9 of this Hindu Minority and Guardianship Act makes the provision for the definition of the testamentary guardians as well as the powers. While going through this particular section, we will come to mostly know what do we mean by the term testamentary guardian, but their powers are very limitedly described under this particular act. We have to keep it in mind while discussing the powers of the guardian, the powers which were given under the head natural guardian, and the powers which the generally guardian exercise in order to protect the person, that is to say, the interest of the minor and the minor's property. So, now we'll study this particular section 9, which deals with the testamentary guardian and their powers. Now, let us see what has been provided under this particular section. The testamentary guardian is that who is appointed by will, either by the father or the mother of the minor for protecting the minor's person और माइनर्स प्रॉपर्टी. तो जो टेस्टामेंटरी गार्जियन है ये एक ऐसा पर्सन है जिसको कि विल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. विल कौन बनाएगा? फादर बनाएंगे या फिर मदर बनाएगी ऑफ द माइनर. किस लिए बनाएंगे? माइनर के पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए, माइनर की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर द अनडिवाइडेड इंटरेस्ट ऑफ द माइनर इन अ जॉइंट फैमिली शैल नॉट बी कवर्ड. अगर हम बात करेंगे यहाँ पे माइनर की प्रॉपर्टी, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी? तो माइनर की प्रॉपर्टी अगर स्पेसिफिकली मदर और फादर जो है उन्होंने यदि ट्रांसफर की है उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी तो वो कवर होगी. लेकिन यहाँ पे अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर में जो माइनर का अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है इन दैट पर्टिकुलर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी वो कवर नहीं होगा. वो क्यों कवर नहीं होगा? फॉर द रीजन दैट माइनर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स बर्थ इटसेल्फ क्या मिल जाता है उसको? प्रॉपर्टी में राइट मिल जाता है. और इसीलिए माइनर का वो राइट तो किसी भी तरीके से देखा जाए तो एडवर्सली अफेक्ट नहीं होने वाला है. और ऐसे में फादर विल बना के या मदर विल बना के वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट से बच्चे को ट्रांसफर करे इसकी ज़रूरत ही नहीं है. एंड हेंस that particular property definition does not inclusive of the minor's share in the joint family property. Now let us see what the further provided as in this particular section. When a father appoints a guardian by a will, अगर फादर जो है वो गार्जियन अपॉइंट कर रहे हैं बाय विल एंड डाइज बिफोर द मदर ऑफ द माइनर, यानी मदर है, फादर की डेथ हो जाती है, फादर ने क्या बनाया है? गार्जियन बनाया है, विल बना के गार्जियन अपॉइंट किया है. देन द अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्जियन बाय द फादर बाय विल शैल हैव नो इफेक्ट. क्योंकि मदर जिंदा है ना अभी, तो फादर सबसे पहले नेचुरल गार्जियन थे, फादर के बाद में मदर नेचुरल गार्जियन रहेगी. अगर फादर ने मरते वक्त में या मरने से पहले यदि गार्जियन अपॉइंट कर दिया है बट मदर स्टिल है एग्जिस्टेंस में, देन इन दैट केस जब तक मदर है तब तक फादर के द्वारा विल बना के जो गार्जियन अपॉइंट किया गया है उसको किसी तरीके का इफेक्ट नहीं रहेगा. बिकॉज इफ द मदर सर्वाइव द फादर she acts as a natural guardian to the minor. But in case mother dies without making will, लेकिन यदि फादर की डेथ हुई, फादर ने विल बनाया था पर मदर जिंदा थी, तो मदर नेचुरल गार्जियन रहेगी. बट यदि मान लीजिए मदर की डेथ हो जाती है और मदर किसी दूसरा विल नहीं बनाती है, देन इन दैट केस फादर के द्वारा बनाए गए विल में जो गार्जियन अपॉइंट किया गया था वो गार्जियन जो है वो वुड बी कंसिडर्ड टू बी अ guardian, to be considered to be a testamentary guardian in order to protect the interest of the minor or the minor's property. Now let us see further what is the second point provide. Second point says that if the father is disentitled to be a guardian, अगर father disentitle हो जाते हैं as a guardian करके, disentitle कब हो जाते हैं? Suppose if he ceases to be Hindu or if he becomes a sannyasi, you remember all these points, या फिर उनको वो अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्जियन, देन इन दैट केस द मदर वुड बी कंसिडर्ड टू बी अ गार्जियन. In case widow is there, then in that case she would be considered to be a natural guardian of her minor. ऐसी सिचुएशन में मदर जो है उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है बाय वे ऑफ विल. हम क्या कर सकते हैं? एज अ गार्जियन करके अपॉइंट कर सकते हैं. तो ये दोनों सूरतों में देखा जाए तो क्या है? पहले तो नेचुरल गार्जियन अगर है सर्वाइविंग,
then in that case that particular natural guardian would be considered to be the guardian. But in case if the natural guardian dies and if there any of the will exist which provides that anyone the third person or maybe any of the other natural guardian to be considered to be for the position of the guardian, then in that case that particular third person or maybe in the second point what we have seen that a mother is also entitled to be appointed as a guardian by way of a will. Now, what does third point provides that where an illegitimate minor is there, then the mother acts as a natural guardian for that minor and the mother is also entitled to appoint a guardian for the minor by way of will. अगर illegitimate minor है then in that case mother जो है वो natural guardian करके act करेगी minor के लिए and if the minor is also entitled and if the mother is also entitled to appoint a guardian for a minor by way of will. अगर mother जो है वो custody उसके पास में है बच्चे की, बच्चा जो है यदि वो illegitimate है and mother will बना के भी क्या कर सकती है उस minor child के लिए guardian appoint कर सकती है. Now next is a guardian is so appointed by a will after a father or a mother shall be having all the rights of the natural guardian under this act. जो गार्जियन है जिसे अपॉइंट किया गया है विल के द्वारा आफ्टर द फादर और मदर उसको सारे पावर्स रहेंगे या सारे राइट्स रहेंगे किसके जो कि नेचुरल गार्जियन को थे under this particular act. Whatever the rights, powers and the duties of natural guardian possesses with respect to the minor shall be possessed by the testamentary guardian. तो जो नेचुरल गार्जियन है उसके ही सारे राइट जो है वो टेस्टामेंटरी गार्जियन को रहेंगे, जो सारे ड्यूटीज हैं नेचुरल गार्जियन के वही सारी ड्यूटीज टेस्टामेंटरी गार्जियन को भी आएगी. So these were the powers. Now let us see what is the next power. If in case the guardian is appointed for a girl, then in that case he shall ceases to be a guardian after the girl's marriage. तो अगर लड़की के लिए अपॉइंट किया गया है और लड़की जो है यदि उसकी बाद में शादी हो जाती है तो जो गार्जियन अपॉइंट किया गया था बाय वे ऑफ विल वो he will be ceases to be the guardian of that particular girl because जो मैरिड गर्ल है उसके लिए नेचुरल गार्जियन कौन होता है उसका हस्बैंड होता है और इसीलिए यहाँ पे भी टेस्टामेंटरी गार्जियन जो है would be the husband only. So in case of a guardian is appointed for a girl, then he shall ceases to be a guardian after the girl's marriage because her husband becomes her guardian. So thank you students. I hope you understood this particular concept.